Morning to all of you. So students, today we will study equivalence relation and partial order relation, partially ordered set, equivalence class and partition, and also solve some examples on these relations. So first is the equivalence relation. A relation R on a set A is called an equivalence relation if it satisfies following three properties. So first, what are these three properties? First property is that R is reflexive. Second is that R is symmetric. Third one is that R is transitive. So for reflexive, we have to show the relation that is A is related to A. Similarly, for symmetric, we have to show A is related to B implies B is related to A. And for transitive, we have to show if A is related to B and B is related to C, then A is related to C. So consider one example. Let A is equal to 1, 2, 3 and 4. So these are the four elements in this set A. Now we have to define a relation on this set. So I have defined this relation which consists of following ordered pairs, that is ordered pair 1 1, 1 3, 2 2, 2 4, 3 1, 3 3, 4 2, 4 4, 2 1 and 4 1. So now we have to show that this relation is basically reflexive on this set. So for reflexive, we have to show that A is related to A. So clearly 1 is related to 1 from this relation, from this that which we have defined on this set. So 1 is related to 1. Similarly 2 is related to 2. 3 is related to 3 and 4 is related to 4. So clearly A is related to A and B and we can also say that for all A belongs to the set A. So all these elements are from this set A and these are related to itself. So hence this relation R is reflexive. Next property is that R is symmetric. So for symmetric, what we have to prove? That we have to prove that if A is related to B implies B is related to A. So I will consider this ordered pair 2 is related to 4. So I will take here as 2 is related to 4 implies 4 is related to 2, because this 4 is related to 2 also belongs this relation. So this whole set. So here R is symmetric. Next is the transitive. So for this we have to show if A is related to B and B is related to C, then A is related to C. So for this I will take this pair, that is if consider this pair 4 is related to 2 and 2 is related to 1. So I am taking this ordered pair 4 is related to 2 and 2 is related to 1, which implies 4 is related to 1 and this also belongs to this relation. So clearly it also satisfies the property of all these properties. So hence this R is an equivalence relation. सो इक्विवेलेंस रिलेशन में हमें करना क्या है? हमें सिंपली थ्री प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना है. फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि हमें रिफ्लेक्सिव शो करना है. सेकंड है कि हमें बताना है कि जो आर है वो सिमेट्रिक है. और थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव. अब इन जैसे रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट है वो खुद के साथ ही रिलेट करेगा, दैट इज ए इज रिलेटेड टू ए. सिमेट्रिक में होगा अगर ए बी से रिलेट कर रहा है तो बी किसको करेगा? ए को रिलेट करेगा. ट्रांजिटिव में ये है कि अगर ए बी को रिलेट करेगा और बी सी को रिलेट करेगा, उसका मतलब ये हो गया कि ए जो करेगा वो सी को रिलेट करेगा. सो यहाँ पे मैंने एक सेट ले लिया है ए और उसके ऊपर ये रिलेशन डिफाइन किया. तो ये जो रिलेशन है यहाँ से इस रिलेशन से हम क्लियरली इजीली प्रूव कर सकते हैं कि जो ये आर है ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है. क्योंकि अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये जो ऑर्डर्ड पेयर 1 1 है ये भी इस आर को बिलोंग कर रहा है. इसी तरीके से जो 2 2 है वो भी इस ऑर्डर्ड पे ये इस रिलेशन को कंटेन कर रहा है. इसी तरीके से 3 3 एंड 4 4. और सिमेट्रिक के लिए हमें क्या शो करना है कि अगर ए जो है वो रिलेट कर रहा है बी को तो इम्प्लाई करेगा बी किसको रिलेट करेगा? ए को. सो यहाँ से अगर हमने ये दो ऑर्डर्ड पेयर ले लेते हैं और यहाँ से क्लियरली पता हमें चल जाता है कि ये सिमेट्रिक भी है. इसी तरीके से ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या लिया? अगर ए क्या कर रहा है? बी से रिलेट कर रहा है और बी किसको रिलेट कर रहा है? सी को. सो उससे क्या हमें मिलेगा कि जो ए है वो किसको रिलेट करेगा? सी से. मीन्स ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये हमें वापस इसी रिलेशन में आना चाहिए. अगर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है दिस मीन्स ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव होगा. सो ये हमारे पास थी डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास.
इक्विवेलेंस रिलेशन. सो नेक्स्ट इज द पार्शियल ऑर्डर रिलेशन. अब पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में से डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम सिमेट्रिक लेते थे मगर यहाँ पे आपको एंटी सिमेट्रिक लेना और बाकी दो प्रॉपर्टी सेम रहती है. सो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ए रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन if it satisfies the following three properties. So first one is R is reflexive, second is R is transitive, and third is R should be anti-symmetric. So for reflexive we have to show A is related to A for all A in A. Similarly for transitive we have to show if A is related to B and B is related to C implies A is related to C. And for anti-symmetric we have to show if A is related to B and B is related to A implies A is equal to B. So consider this example. Let A is equal to 1, 2, 3, 4. So this is the set A and this is the relation R which I have defined on this set. So for this I have to show that this relation is basically partial order relation, and for partial order relation I have to prove three properties. First one is the reflexive, second is transitive, and third is anti-symmetric. So clearly I will write here 1 is related to 1, similarly 2 is related to 2, 3 is related to 3, and 4 is related to 4. So it implies that A is related to A for all A in A, hence it is symmetric. So hence relation is symmetric. Next is transitive. For transitive I am taking the ordered pair. This one 4 is related to 2 and I will take another ordered pair, that is 2 is related to 1. So 4 is related to 2 and also 2 is related to 1. This implies 4 is related to 1. So means this ordered pair also belongs to this set. So this is the ordered pair 4, 1. So from here transitivity is also proved. Now for anti-symmetric what I have to basically prove, so for this I have to basically prove if A is related to B and B is related to A, then it implies that A is equal to B, or we can sometimes also define this relation as if AB belongs to set A and A is not equal to B and AB belongs to R, this ordered pair AB belongs to R implies BA does not belongs to R. So this is also one definition of anti-symmetric. So if I will take this ordered pair 3, 1. So if I will write that 3 is related to 1. So this implies that 1, 1 is not related to 3. So because this 1 is not related, because this ordered pair 1, 3 does not belongs to this R. So from here also we will get that A1 is not equal to 3. So hence this is also anti-symmetric. So this example satisfies all the three properties and hence R is the partial order relation. सो सिंपली आपने पार्शियल ऑर्डर के लिए ये तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी है. अब यहाँ पे हमने सिंपली रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता ही है किस तरीके से शो करना है, ट्रांजिटिव के लिए भी आपको पता है, एंटी सिमेट्रिक में या आप ए इज रिलेटेड टू बी ले सकते हैं और बी ए को रिलेट कर रहा है इंप्लाइज ए इक्वल टू बी हो, या इसका दूसरा वे कैसा है कि अगर ए बी किसको बिलोंग कर रहा है ए को, और ए क्या होना चाहिए वो बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, और ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये किस में बिलोंग करना चाहिए, आर को इम्प्लाई क्या करेगा, जो बी ए है वो आर को बिलोंग नहीं करना चाहिए. सो अब यहाँ पे अगर हम देखें, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर 3 1 लेके चलते हैं, अब देखिए 3 जो है वो रिलेट कर रहा है 1 से, तो मीन्स ये तो आर को बिलोंग कर रहा है. और अगर यहीं से देखेंगे इसका मतलब रिवर्स देखेंगे, दैट इज बी ए हमारे पास हो जाएगा 1 3, वो इस ऑर्डर्ड जो ये जो रिलेशन है इसको बिलोंग नहीं कर रहा है. सो और ये जो 1 है वो 3 के इक्वल भी नहीं है. सो यहाँ से ये भी शो हो जाता है कि ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक है. So next is the POSET, definition of POSET. So a set A together with a partial order relation R on set A is called POSET. So that set which contains the set and the partial order relation together is known as the partially ordered set. Next is the total order relation. So a relation R on the set A is called total order relation if for all AB in A we have
either A is related to B or B is related to A, or we can say A is equal to B. So if a relation satisfies either of these properties, or we can say either of these condition, so we can say that that set is, or we can say that the relation on that set is total order relation. Next is composition of a relation. So let R be a relation from set A to B. Similarly, I am taking another relation, that is S, and it is from the set B to C. Then the composition relation, or we can say the composition mapping, denoted by S composition, or this is the mapping from the set A to C. So if R is from A to B, this is one relation, and another is S and it is from B to C, then S composition R is the relation from A to C. So mathematically we define it as S composition R, this is equal to the ordered pair AC, such that there exists one B in B for which A is related to B and B is related B is related to C. So this AB ordered pair AB, this should belong to the relation R, and this ordered pair should belong to S. So this is for this is the definition for composition of the relation. Similarly, if the set A is non-empty set and R and S are two relations on set A, then the composition of R and S is denoted by S composition R and is defined as S composition R, this is equal to ordered pair AC, such that there exists B in A for which AB belongs to R and BC belongs to S. So consider one example. I am going to prove this example. I am going to find the S composition R and R composition S. So clearly here S composition R is equal to S composition R, this is basically equal to, so as per definition what it says, if A B belongs to R, and we can write here like if A is related to B and this belongs to R, similarly B is related to C and this belongs to S, then we will get A is related to C and this belongs to the S composition R. So I am taking here the ordered pair. For example, I am taking the ordered pair 7 is related to 4. Okay, 7 is related to 4. So this is the ordered pair, 7 is related to 4. So clearly this 7 is related to 4 belongs to, so this basically belongs to R. Similarly, if I will take another ordered pair from this set, that is from this relation, this is S. So I am taking here 4 is related to 3. So here 4 is related to 3. So this belongs to S. Then what will be the S composition R? So S composition R will be this A is related to C. So A is here. So A is equal to, what is C? So A is here 7. So I will write 7, and what is C? C is 3. So clearly I will write that 7 is related to 3. So this belongs to S composition R. So clearly S composition R, this is equal to the ordered pair S3. Similarly, SOR is this. Similarly, ROS, that is R composition S, this is equal to 3. This is equal to basically 3 4, ordered pair 3 4 and 4 6. So अगर मैं यहाँ पे ये दो ऑर्डर पेयर्स ले लूँ, कौन कौन से ऑर्डर पेयर, जैसे ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर में यहाँ पे ले जाऊँ, 3 इज रिलेटेड टू 7. सो ये आ गया 3 इज रिलेटेड टू 7. और मुझे दूसरा ऑर्डर पेयर कौन सा मैं ले लेती हूँ, अगला मैं ले लेती हूँ जो 7 है, वो रिलेट कर रहा है 4 को. ये मैंने इस सेट से ले लिया. सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जो 3 है वो किसको रिलेट करेगा, 4 को. सो ये किसको बिलोंग कर गया, ROS को, मीन्स R कंपोजिशन S को. सो यहाँ पे आ गया 3 4. इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ये ले लूँ कि जो 4 है वो रिलेट कर रहा है 3 को. सो यहाँ से आ गया ये टर्म 4 इज रिलेटेड टू 3. एंड में दूसरा क्या आ जाएगा, 3 किसको रिलेट कर रहा है, 6 को. तो ये आ गया 3 इज रिलेटेड टू 6. सो यहाँ से क्या शो हो गया कि जो 4 है वो रिलेट करेगा 6 को. तो ये हमारे पास आ गया. और ये किसको
बिलोंग करेगा, आर कंपोजिशन एस को। सो यहाँ से हमारे पास क्लियरली क्या चीज़ प्रूव हुई कि जो आर कंपोजिशन एस है दिस इज नॉट इक्वल टू एस कंपोजिशन आर। सो ऑल्सो अगर हमें इसके इन्वर्सेस लेने हो, फॉर एग्जाम्पल हमें कई बार पूछा जाए कि व्हाट इज द आर इनवर्स, देन आर इनवर्स इज बेसिकली these elements, that is we have to reverse these elements. So पहले r था 1 2, now I will write here that 2 1 ordered pair 2 1. Similarly next will be 5 2, then next ordered pair will be 6 3, and last will be 4 and 7. So this is the r inverse of r. Similarly s inverse, this is equal to 4 1, then 7 5 7 and 7 3, and other term will be 3 4. So these are the inverses of r and s. So next is the equivalence class. So we say that let R be an equivalence relation on a non-empty set X, and let A belongs to X. Then the equivalence class of A is denoted by this square bracket and is defined as equivalence class of A. This is equal to the element B in X such that B is related to A. So if we will satisfy this relation, means this condition, then we get the equivalence class. So consider one example. Let A is equal to this set that contains elements 1 2 3, and I am defining one relation on this set. So this is the relation which contains these ordered pairs, that is ordered pair 1 1 2 1 1 2 2 2 and 3 3. So clearly from this relation we have seen that the equivalence class of 1, this is equal to the 1 and 2, because 1 and 2 are only related with 1. So here this condition is satisfied. Similarly equivalence class of 2 is equal to 2 and 1, because 2 is related to 1 and 2 itself, and not with any other element. Similarly the equivalence class of 3, this is equal to 3, because 3 is related to 3 only and no other element of this set A. So we observe that any two equivalence classes are either disjoint or identical. So distinct equivalence classes are, so from here, from this example we have distinct equivalence classes, and it is 1 and 3. Similarly if we take the union of equivalence class of 1 with respect to this equivalence class 3, we get the main set, that is the set A. And if we take the intersection of these two equivalence classes, we get empty set. So because there is no term, or we can say no element which is common between these two equivalent classes. So then R is an equivalence relation on A. सो इसमें इक्विवेलेंस क्लास में हमें क्या करना पड़ता है? इक्विवेलेंस क्लास बेसिकली होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट, एक हमारे पास पहले एक नॉन एम्प्टी सेट हो, उसके ऊपर हमने एक रिलेशन डिफाइन की हो, और अगर हम कहते हैं कि कोई जो उसमें एलिमेंट उस सेट में है अगर वो इससे रिलेटेड है, मतलब कैसे B इज रिलेटेड टू A से, सो हम क्या कहेंगे, वो क्या फॉर्म करेगा? इक्विवेलेंस क्लास। अब उसके लिए हमने जैसे एक एग्जाम्पल कंसिडर कर दिया, ये A मेरे पास, मैंने एक सेट ले लिया और मैंने क्या कर दिया डिफाइन, क्लियरली मैंने इसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन किया है। सो अब जो यहाँ से क्लियरली पता चलता है कि जो ये 1 है ये किस किस के साथ रिलेट है, या ये खुद के साथ रिलेट हो रहा है, या ये 2 के साथ रिलेट हो रहा है, और 3 के साथ रिलेट नहीं हो रहा है, मीन्स 3 के साथ ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना रहा है। तो क्लियरली हम लिख सकते हैं कि सिंस ओनली 1 and 2 आर रिलेटेड टू 1, सो यहाँ से जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 है वो क्या बन जाएगा? 1 और 2। मीन्स हमें वो टर्म्स देखने, वो एलिमेंट्स देखने जिसके साथ ये क्या करेगा? रिलेट करेगा। इसी तरीके से सो सिमिलरली यहाँ पे जैसे 2 इक्विवेलेंस क्लास था, ये भी अगर देखा जाएगा 2 सिर्फ या तो खुद के साथ रिलेट कर रहा है या 1 के साथ रिलेट कर रहा है, ये भी 3 के साथ रिलेट नहीं कर रहा, मीन्स ये कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना रहा। सो यहाँ से क्लियरली क्या आ जाएगा कि जो इक्विवेलेंस क्लास 2 है उसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे? खाली 2 और 1। जो इक्विवेलेंस क्लास 3 है वो सिर्फ 3 के साथ रिलेट कर रहा है, क्योंकि वो यही एक सिंगल ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है। सो यहाँ से क्लियरली शो हो गया जो इक्विवेलेंस क्लास 3 है दैट इज इक्वल टू 3।
सो अगर हम यहाँ से एक और चीज़ आपको पता चलेगा कि जो जितने जैसे हम कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लासेस लेंगे या तो वो डिसजॉइंट होंगे या वो आइडेंटिकल होंगे। अब अगर हम यही जो जैसे हमने डिस्टिंक्ट जो हमारे पास इक्विवेलेंस क्लासेस बन गए, कौन कौन से बन गए, दैट एक तो हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास 1 आ गया और इक्विवेलेंस क्लास 3 आ गया। सो अगर हम इन दो जो ये डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस हैं इनका यूनियन ले लें तो क्या मिलेगा, हमें जो मेन सेट है वही मिलेगा। इसी तरीके से अगर ये जो दो डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस आए थे, अगर हम उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें किसके इक्वल आ जाएगा, एम्प्टी सेट के लिए। सो हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। Next is the partition. So a collection A lambda of subsets of a set X is said to form a partition of X if first property X is equal to union of A lambda, and second A lambdas are pairwise disjoint. That is, if lambda 1 is equal to lambda 2, then A1 intersection A2, this is equal to empty set. So this is the definition of partition. So for this, consider one example. Let X is equal to 1 2 3, and I am taking this subset, that is A1 is equal to 1 and similarly A2 is equal to 2 and 3. So these are the elements in this subset. So from this we have seen that the collection A1 and A2 means subset of collection of these subsets, or we can say it is a collection of subsets of set X, such that what happens, if we take the union of A1 in a union A2, we get the main set, that is X, and which is equal to 1 2 3, and if we take the intersection of these two subsets we get the empty set. So from here it is pairwise disjoint. Next is the quotient of A by R. So let R be an equivalence relation on A, then the collection of equivalent classes of elements of A is called quotient of A by R. So all the collections of equivalence classes of a set of elements of the set A is called the equivalence is called the quotient of A by R. So mathematically we will write A quotient R, this is equal to the set means collection of all equivalence classes such that A belongs to A. Last term is that the fundamental theorem on relations. So if R is an equivalence relation on A, then we have to prove that A quotient R is the partition of A. So this I am only giving the statement, I am not proving this. So you have to remember this fundamental theorem on relations. सो पार्टीशन में हमें क्या करना है, मैं आपको एक बार फिर समझा देती हूँ। इसमें क्या होता है कि जो हम कलेक्शन लेते हैं सबसेट्स का, अगर हमारे पास कोई सेट एक्स है उसमें हम क्या ले रहे हैं, सबसेट्स ले रहे हैं, उनका जो कलेक्शन होगा वो क्या फॉर्म करेगा, एक पार्टीशन फॉर्म करेगा। अगर क्या होगा, अगर ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो, एक तो ये रहेगा कि जो सेट एक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, वो यूनियन होगा सारे सबसेट्स का। इसी तरीके से जो ये सबसेट्स होंगे ये आपस में क्या होंगे, पेयर वाइज डिसजॉइंट होंगे। तो मीन्स ये कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल ले ली थी, यहाँ पे सेट एक्स ले लिया, A1 ले लिया, A2 ले लिया। तो क्लियरली यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो दो सबसेट्स है इनका जो यूनियन है वो मेन सेट आ जाएगा, और अगर इनका इंटरसेक्शन देखेंगे वो एम्प्टी आ जाएगा। नेक्स्ट था क्वोशंट ऑफ ए बाई आर। तो क्वोशंट ऑफ ए बाई आर क्या होता है, जितने भी हम इक्विवेलेंस क्लासेस का कलेक्शन लेंगे उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बेसिकली क्वोशंट ऑफ ए बाई आर। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स. So one example is that let Z be the set of all integers and R be the relation on Z defined as R is R's ordered pair AB such that AB belongs to Z and A minus B is divisible by 5. So then we have to prove that R is an equivalence relation. So इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिंपल आए, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो देखें इसको हमें कैसे प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि जो हमारे पास डिफाइंड है, तो हमारे पास R जो गिवन है दैट इज इक्वल टू ए बी ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट 5 डिवाइड्स, ये किसको डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड्स A माइनस बी। यही मतलब हो गया कि ए बी इज डिविजिबल बाय 5 मीन्स ए जो 5 है वो डिवाइड किसको कर रहा है, A माइनस बी को। और यहाँ पे क्या हमारे पास है कि जो वेयर R जो है वो इज इन द सेट ऑफ इंटीजर्स, इज इन द सेट ऑफ इंटीजर्स। सो सेट ऑफ इंटीजर्स में लिखती हूँ इज इन द सेट Z ऑफ इंटीजर्स, ऐसे लिखते हैं। सो सेट Z ऑफ इंटीजर्स,
ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या चीज़ प्रूव करनी होती है, हमें इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करने के लिए हमें तीन प्रॉपर्टीज प्रूव करनी होती है। फर्स्ट होती है रिफ्लेक्सिव, सेकंड होता है हमारे पास कि वो सिमेट्रिक होना चाहिए, और थर्ड क्या होना चाहिए, वो ट्रांजिटिव होना चाहिए। सो यही थ्री प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज रिफ्लेक्सिव। सो देखिए मैं कैसे उसको सॉल्व करूंगी, आप लोग भी ऐसे ही सॉल्व करना पेपर में। सो रिफ्लेक्सिव में हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्सिव कहता है कि ए क्या करना चाहिए, ए से रिलेट करना चाहिए, एंड फॉर ऑल ए किसको बिलोंग करेगा, उस सेट को। सो यहाँ पे भी हम सेम यही चीज़ करेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास दिया हुआ है ये कंडीशन दी हुई है, सो हम लिखेंगे यहाँ पे कि दैट ए माइनस ए, सो बी की जगह पे आएगा ए माइनस ए, दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0, और वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 0, क्योंकि अगर आप इसको 5 से मल्टीपल भी करोगे स्टिल वो 0 ही रहेगा। सो यहाँ से ये क्या शो कर देगा, यहाँ से सिंपली शो करेगा जो ये 5 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड्स ए माइनस ए, क्योंकि अगर हम इसके न्यूमरेटर में लिख लेंगे तो वो उसका मतलब क्या आ जाएगा कि जो 5 है वो डिवाइड किसको कर रहा है, ए माइनस ए को। सो यहाँ से हमारे पास आया दिस इम्प्लाइज दैट जो ए है वो किसको बिलोंग कर गया, आर को, या हम लिख सकते हैं ए क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है ए से। सो देयरफॉर वी विल राइट आर जो रिलेशन है वो क्या हो गया हमारे पास, रिफ्लेक्सिव हो गया। सो बड़ा सिंपल है, जस्ट थोड़ा सा लॉजिक लगाएं और आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड है हमारे पास दैट इट शुड बी सिमेट्रिक, जो रिलेशन आर है वो क्या होना चाहिए हमारे पास, सिमेट्रिक होना चाहिए। तो अब देखें इसको क्या करना है, अब सिमेट्रिसिटी में क्या होता है हमारे पास, अगर ए रिलेट कर रहा है बी को तो इंप्लाई करना चाहिए बी किसको रिलेट करना चाहिए, ए को। सो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट ए जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी है वो किसको बिलोंग कर रहा है, आर को। सो देयरफॉर उसका मतलब क्या हो गया, जो 5 है वो किसको डिवाइड करेगा, इस कंडीशन को, दैट इज ए माइनस बी को। सो दिस इंप्लाइज ए माइनस बी जो है वो किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। और मैं साथ में लिखती हूँ 5 देन एन, एन क्या है, एन कोई भी, एन जो है वो कोई भी नंबर है जो इंटीजर से ले रहे हैं, तो मीन्स हम लिख सकते हैं एन फॉर सम, क्योंकि ये इंटीजर्स की बात हो रही थी यहाँ पे, सो फॉर सम एन बिलोंग्स टू जेड। तो मीन अगर यहाँ पे 1 होगा तो ये ए माइनस बी यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। इसी तरीके से एन जैसे जैसे चेंज करोगे वैसे वैसे टर्म्स आ जाएगी। सो यहाँ से हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको रिवर्स कर दें तो ये बन जाएगा 5 बी माइनस ए जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स, ये यहाँ से जो इसका सब्ट्रैक्शन साइन है वो मैं इस साइड ले लेती हूँ, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो यहाँ से क्लियरली हमारे पास आ जाएगा दैट जो 5 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, बी माइनस ए को कर रहा है। तो यहाँ से हमने क्या शो कर दिया कि जो बी माइनस ए और वी कैन से ऑर्डर्ड पेयर बी ए है वो किसको बिलोंग कर रहा है, आर को। सो अगर बी ए को, ए बी को रिलेट कर रहा है, बी ए को रिलेट, अगर ए बी को रिलेट कर रहा है इंप्लाई कर रहा है बी ए को रिलेट कर रहा है, सो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर क्या आ गया, सिमेट्रिक आ गया। सो आर इज सिमेट्रिक as A is related to B and B is implies B is related to A, implies B is related to A। so ये हमारे पास शो हो गया सिमेट्रिक। अब हमें प्रूव करना है ट्रांजिटिव। सो थर्ड कंडीशन है हमारे पास ट्रांजिटिव। सो ट्रांजिटिव के लिए भी सेम प्रोसीजर हमने करना है। सो ट्रांजिटिव में क्या होता है हमारे पास, अगर ए क्या करेगा, वो रिलेट कर रहा है बी से, और बी एंड बी किसको रिलेट कर रहा है, बी इज रिलेटेड टू सी, इम्प्लाइज ए किसको रिलेट करेगा, सी को करेगा। सो या आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी है वो आर को बिलोंग कर रहा है, जो बी सी है ऑर्डर्ड पेयर बी सी ये भी आर को बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव आ गया। सो यहाँ पे भी अब हम यही अप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे लेट ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। सो हमने दो ऑर्डर्ड पेयर्स ले लिए, ये भी आर को बिलोंग कर रहा है और ये भी आर को बिलोंग कर रहा है। सो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, कंडीशन लगाओ, 5 किसको डिवाइड करेगा, ए माइनस बी को, और इसी तरीके से यहाँ से दूसरे टर्म से क्या लिखेंगे हम, 5 किसको डिवाइड करेगा, 5 करेगा डिवाइड किसको, बी माइनस सी को। ठीक है, सो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं जो 5 है वो डिवाइड करेगा ए माइनस बी को और बी माइनस सी को।
सो यहाँ से हम अगेन इसको फर्दर लिख सकते हैं कि दैट a माइनस बी किसके इक्वल हम लिख रहे हैं 5 इंटू n1, और यहाँ पे ध्यान रखें ये जो n1 है ये हम कहाँ से ले रहे हैं, इंटीजर से. सो एंड ऑल्सो आई कैन राइट हियर b माइनस c दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स n2 फॉर सम n1 comma n2 this belongs to the set of integers. अब आप देखें यहाँ से अगर हम इन दोनों जो ये टर्म्स हैं इनका प्रोडक्ट ले लें, सॉरी प्रोडक्ट नहीं एडिशन ले लें, तो क्या हमारे पास आ जाएगा, सो a माइनस बी देन एडिशन b माइनस सी, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा 5 टाइम्स n1 प्लस 5 टाइम्स n2 ये आ जाएगा. सो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, यहाँ से b और b कैंसिल हो जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा, ये n1 प्लस n2 हो जाएगा. सो यहाँ से आएगा a माइनस सी जो आया वो किसके इक्वल आया 5 टाइम्स n1 प्लस n2. सो यहाँ से क्या शो हो गया, अगर ये 5 इसके डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो ये बन जाएगा कि जो ए सी है वो क्या किससे डिविजिबल है, 5 से है. तो हम लिख सकते हैं ए सी इज डिविजिबल बाय 5, और वी कैन से 5 डिवाइड्स a माइनस सी. सो ये भी टर्म हमारे पास आ गई. सो दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर. सो देयरफॉर आई विल राइट ऑर्डर्ड पेयर ए बी एंड ऑर्डर्ड पेयर बी सी ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, आर को कर रहे हैं. सो बिलोंग्स टू आर, belongs to R. So this implies जो ordered pair AC है वो किसको belong कर रहा है, R को. Hence R is transitive. यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, R क्या बन गया, transitive बन गया. So therefore as R satisfies all the conditions, satisfies all the conditions of equivalence relation, equivalence relation. So hence R is an equivalence relation. Hence proved. So इस टाइप से भी आपको क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं सॉल्व करने के लिए. So thank you.